All right, we are now joined by Raman Malik of the BJP. Mr. Malik, thank you so much for joining us. Could you give us your first reaction to this latest development in Sonali Phogat's case, where two more people have been arrested? One is a drug peddler and one is the owner of the pub in Goa. See, I have been stating this very clearly since the first day. That one, it is a big loss, not just for the BJP family, but actually the daughter and the complete family of Sonali ji. But at the same time, I want to wait for the complete investigation to happen. All wires, all points to be connected and have a complete detail of who all and what all transpired in that night and what was the idea behind doing all of that for those accused. Because this has to come out. And for a closure for a family of about 30-35 lakh BJP workers of Haryana and the immediate family and the daughter, it is necessary that all angles involved, all people involved are booked for their sins. And we trust the investigative agencies involved, and my chief minister, my home minister, my party president are in touch with the Goa chief minister, Goa home department, as well as the Goa party chief, so that a worker who has lost her life under circumstances which are suspicious should be getting a closure, should be getting justice. Absolutely. This is a very alarming situation that is unfolding when it comes to Sonali Phogat's death case. Now, essentially, thank you so much for speaking with the channel and giving us your perspective on this entire matter. I'm also going to be crossing over to Mr. Hemant Atri, who's a senior journalist and is now joining us on the newscast. Mr. Atri, essentially, two more people have been arrested, making it a total of 4 people who have been arrested in connection with Sonali Phogat's death. What do you have to say about the fact that the Goa pub owner now has been arrested and a drug peddler has now been arrested? See, Shilpa, it was actually overdue. Basically, whatever has happened, that has happened in that restaurant. And she remained there for quite some time, say about 6 hours during the whole thing. Initially, they were dancing, enjoying. Then the drug was given to her orally, which is being captured by the, CCTV cameras. And once she was not feeling well, she was taken to the washroom and she was kept there for 3 hours. So who is responsible for all that? Who is there to take care of the guests there? See, the restaurant owner is 100% liable. He is culpable for everything. And similarly, the drug peddler who had supplied that drug, which is a CNS stimulant, as I am told, he is also a party to the case for supplying this. Of course, he will be a part of 120B or something, or supplying drug or narcotics act. That is yet to be seen, Shilpa. But yes, they are 100% culpable, and in the morning only they have been, arrested or rounded up, you can say. Yes. All right, Mr. Atri, thank you so much for joining us and giving us your perspective on this latest development. Now, I'm crossing back over to our correspondent, Nikhil Lakhwani, who is joining us live from Hisar. Essentially, Nikhil, we just listened in to Mr. Raman Malik of the BJP and also Mr. Hemant Atri. Now, they gave their perspectives on this entire matter. Now, what I wanted to ask you is about this entire web that's unfolding where 4 people are now believed to be involved. They've been arrested. Do we know about what's going to happen in the hours ahead when it comes to this probe? Well, Aisha, as far as this probe is concerned, this is going in further direction, and what we do know is that 4 people have been arrested. 2 of them, the main accused, they were arrested yesterday only, and another 2 accused, one being the drug dealer, another being the pub owner, they have been arrested. But there are many of the questions which needs to be answered, like I mentioned in the live a while ago, that for 2 to 3 hours, the accused and the victim, they were in the same washroom. This is the reason why what exactly the accused was doing to her. This is something which needs to be known. What was the actual reason of the, what was the intention of the same behind, giving this particular drug overdose as well. These are many of the questions where the probe is going to lead forward, because there are, questions, some are being raised by the family members as well. And in the series of the same, we are also joined by brother Watan of Sonali Phogat. वतन जी, अभी आपको जानकारी मिली होगी कि टोटल अब 4 अरेस्ट हो गए हैं. एक नया ड्रग पेडलर अरेस्ट हुआ है जिसने सुखविंदर को, जो एक और आरोपी थे, उनको ड्रग प्रोवाइड की थी. दूसरा पब ओनर को.
किस दिशा में आपको लगता है कार्रवाई जारी है और परिवार वाले संतुष्ट हैं जिस तरीके से गोवा पुलिस एक्ट कर रही है? हाँ, मेरे को आप जैसे लोगों से मीडिया से पता चला अभी 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है और जैसे जैसे इंक्वायरी बढ़ेगी तो और कुछ सामने आएगा। वतन जी, इंक्वायरी में और कुछ सामने आएगा। प्रॉपर्टी की बात आती है, क्यों आती है? प्रॉपर्टी में ऐसा क्या था, क्यों इतना इंटरेस्ट था पीए सुधीर सांगवान को? आखिर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी क्या कारण है, आपको क्या लगता है? ये इनकी पैतृक संपत्ति है जो मेरे जीजा जी की है और सोनाली के घर में उनकी बेटी थी, 2 ही लोग थे और वो चुनाव से पहले आया था। उन्होंने देखा कि भी सब कुछ अभी 2 ही लोग हैं तो उन्होंने क्या साजिश के तहत ही किया सारा कुछ। उनको लगा भी इनका कोई और वारिस तो है नहीं तो इसीलिए उनकी हत्या की गई है। मतलब अच्छी खासी प्रॉपर्टी है जिसको हत्याने का इंटेंशन सुधीर सांगवान का रहा हो। हाँ, यही है। वो तो देखो भाई ने जब उनसे पूछा भी हमें घर जाना है तो घर तो यहाँ बंद था, वो तो गोवा चले गए थे। उन्होंने पूछा भाई ने भी घर की चाबियां कहाँ है तो बोला गुड़गांव फ्लैट में। तो भाई ने कहा भी गुड़गांव फ्लैट की चाबी दो, हमें घर भी तो खोलना, घर बंद है। तो कहता है गुड़गांव फ्लैट तो मेरा है। तो वहाँ उन्होंने खुद ही शुरुआत कर दी उसने। तो आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं, आपके कहने का, मुझे करेक्ट कीजिएगा, आपके कहने का मतलब ये है कि जो गुड़गांव का सेक्टर 102 का 901 फ्लैट नंबर था जो सोनाली जी का था वो सुधीर सांगवान के नाम पे हो चुका था, ये कह रहे हैं आप? नहीं, ये मेरे को नहीं पता नाम किसके है, लेकिन वो खुद कह रहा है भी ये वो प्रॉपर्टी मेरी है। और सोनाली जी बोलती थी कि वो उनका है। सोनाली देखो जो उनके पास है वो उन्हीं का है, सारा जो भी है उन्हीं के पास। तो कहीं ना कहीं आपको ये शक है कि धीरे धीरे प्रॉपर्टी हथियाने का दौर है, सिलसिला है, वो सुधीर सांगवान की तरफ से शुरू हो चुका था। हाँ, वो उसने खुद ही कहा भी वो फ्लैट मेरा है। कुछ पॉलिटिशियंस का भी नाम आ रहा है, फॉर्मर जो हरियाणा के मिनिस्टर रहे हैं कांडा, गोपाल कांडा जी, क्यों आपको लगता है नाम आ रहा है, क्यों जुड़ कर निकल के आ रहा है? ऐसा क्या एंगल है, परिवार वाले क्या फील करते हैं? आप वो उसका पीछे का बैकग्राउंड देखोगे तो वो गोपाल कांडा के साथ ही मिलेगा आपको सुखविंदर सांगवान। अच्छा। और गोवा में वो उसका वो काम देखता है। अच्छा। आपको लगता है कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी इससे भी बढ़ के हो सकती है? जो मेन अक्यूज है पीए जिनका नाम सुधीर सांगवान है, वो अकेले उनने ये सब किया होगा? और भी लोग हो सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हो सकते हैं? हाँ, वो तो हम ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं भी जांच अच्छे से होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए भी इसने भी किसके कहने पे किया और कब किसने भेजा इसको, किस तरीके से क्या किया इसने, वही बता पाएंगे। पर वतन जी बात ही है ना कि सीबीआई जांच की इंक्वायरी की आप मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं या तो ये है कि गोवा पुलिस इस तरीके से तफ्तीश कर रही है, उससे थोड़ा बहुत एक डिससेटिस्फेक्शन है, उतनी संतुष्टि नहीं है। हाँ, अब जब फर्स्ट में हम देखो, अब आपको पता है शुरू में तो हमें ये मैसेज मिला भी हार्ट फेल है, वहाँ के अधिकारियों ने भी बयान दे दिया न्यूज़ों का भी हार्ट फेल से मौत हो गई है। और हमें तो पहले ही सकता भी उनको हार्ट अटैक नहीं आ सकता। फिर सुधीर सांगवान से जब बात की बार बार वो अपने बयान बदले तो हमें पक्का यकीन हो गया कुछ गड़बड़ है। और फिर भाई गया, उन्होंने उनको देखा, उनकी